सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्त्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि तादा स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलं त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविगसन् नानासृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गतत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगदां पदे तबतबेद् एवं हि वैहायसीं वाणी मे नमशिश्रवः श्रुतिसुगां गुर्वं स्तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुत्वीक्ष किमप्यनीशितवदा वाक्यार्थमुत्पश्यदा दिव्यं वर्षसहस्रमाथ तपसा तेन त्वमारातित तस्मै दर्शितवानशिश्वनिलयं वैकुण्ठमेघात्पुदं माया यत्र कदापि नो विगुरुते पादे जगत्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वशमुखा भावास्तु दूरं कदा सान्त्रानन्दझरी च यत्र परम ज्योतिर्प्रकाशात्मके तत्ते तामविभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातद्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालया भक्ति प्राप्त तदा विदो न तबता दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते तामनिरस्तशर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रलतया विद्योदिता शान्तरा पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं तेहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं बाष्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् यागल्पदीभ्राकृती श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधि तत्ते विभो पातु मे कालाम्पोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्तहसित स्यन्दप्रशन्नाननं राजत्कम्बुगदारि पङ्कजतर श्रीमत्पूजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं बभूस्तव विभो मत्रोगमुद्वाशयेत् दृष्ट्वा सम्प्रदशम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतित प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा बाधय
त्वयिदाद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति याचष्ट तं त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमतदं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविदानशर्गविधिभिः पन्थोऽभिसञ्जायते इत्याभाष्यकिरं प्रदोष्य नितरां दच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लागताम् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।